Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what types of reagents are produced by heterolytic cleavage of bonds? इस question का key concept है heterolytic cleavage of bonds. Heterolytic cleavage of bonds. सबसे पहले देखते हैं what is heterolytic cleavage. हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का बेसिक मतलब होता है uneven breaking of bonds. Uneven breaking of bonds, essentially covalent bonds. Uneven breaking का मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो किसी एक एटॉम पर ट्रांसफर हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट दो आयन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. एक आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड दैट इज ब्रेकिंग, और वो हो जाएगा एनायन. और एक आयन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और वो हो जाएगी हमारी कैटायन. Now it occurs when it occurs when a covalent bond between two atoms break in such a way that the shared pair of electrons in the bond, that the shared pair of electrons of the bond are taken away by one of the bonded atoms. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस कोवेलेंट बॉन्ड में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बस एक बॉन्डेड एटॉम्स पर शिफ्ट हो जाता है बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. एंड एज अ रिजल्ट one atom or fragment of the molecule gains electrons and the other loses electrons, and as a result let's just write, from this heterolytic cleavage cations and anions are formed. Shared pair of electrons जिस एटॉम पर ट्रांसफर हो रहे हैं that will become electron rich and that will form anions, and जहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं the other atom that will become electron deficient and that will form a cation. With an example हम इसे समझते हैं. For example, जब water dissociate करता है, example is dissociation of water. Dissociation of water में heterolytic cleavage होती है. Water is H2O, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O. और जब इसकी heterolytic cleavage होगी, this bond is going to break and the two electrons that are shared in this bond are going to move to the oxygen atom of OH.
और इससे क्या फॉर्म होगा, एक H प्लस कैटायन फॉर्म होगा प्लस एक OH माइनस एनायन फॉर्म होगा। ये बॉन्डेड पेयर में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से जब ब्रेक हो गया ये बॉन्ड, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके OH में चला गया और एज अ रिजल्ट OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई एंड दैट बिकेम एन एनायन। और क्योंकि H में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई देन सो इट बिकेम अ positively charged cation. So this is basically cations and anions are the reagents formed, question में दिया है, are the reagents produced by heterolytic cleavage. Produced by heterolytic bond cleavage. I hope आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।